ट्रेसिंग इज द मेन थिंग हियर। आपको जो ट्रेसिंग करनी है, जो आप इलेवेट करने के लिए जो बेस बेस मॉडल बनाने वाले हैं, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वेक्टर ट्रेसिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि उसी पर ही हमारा जो बेस मॉडल है वो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेक्टर ट्रेसिंग कर रहा हूँ। अगर वेक्टर ट्रेसिंग के लिए आपको इमेज की ज़रा ब्राइटनेस अगर आप कम करना हो तो आप राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके उसकी ब्राइटनेस जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे
In order to make the face relief model in Aspire, we have to make some base relief. That base relief we can make from the Blender software easily. I will show you now how to make that. ये जो फेस रिलीफ का मॉडल है इसको हम 3D में बनाने के लिए उसकी एक बेस बनाते हैं। वो बनाने के लिए हम ब्लेंडर सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इजी हो जाता है। तो सिंपली मैं ब्लेंडर ओपन करता हूँ। Simply I open the blender and you can see in the first you will see some cube. You have to delete that cube. आपको एक क्यूब दिख रहा है उसको आप डिलीट कर दीजिए। फिर फेस बिल्डर में जाइएगा, इन देयर क्रिएट अ न्यू हेड। Okay, you can see there is a human head. Now here you have to add the images. यहाँ से आपको वो जो इमेज है एस्पायर में मैंने दिखाई वो इमेज आपको ओपन करना है। सिंपली उसको इमेज को ओपन कर दिया। Now you have to adjust some points like I am doing here.
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक पॉइंट अपने मॉडल के हिसाब से मैंने एडजस्ट किया है। आई एडजस्टेड each and every point as per the background image and created the face relief from the side view. You can see the face relief model from this. This is how it will look in the front. In the side view, you can see it over here. You can see the side view. It will look like this. Okay, so now I will be exporting the model as a still file with the name Krishna. हमने जो स्टिल फाइल बनाई है अभी उसको हम कृष्णा नाम से एक्सपोर्ट करेंगे स्टिल फॉर्मेट में डेस्कटॉप पे। ठीक है, ये फाइल मैंने एक्सपोर्ट कर दी। उसके बाद मैं एक स्क्रीनशॉट लूंगा। Now I will take one screenshot by pressing Alt and print screen. Go into the paint and simply paste it. This screenshot is just for the reference that how we can paste the model in the Aspire. I will just copy it and save as Krishna on the desktop. हमने जो अभी मॉडल बनाया है ब्लेंडर में, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है और उसको कृष्णा नाम से मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है। ओके, अभी ये जो फाइल है ये भी मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे विद द नेम कृष्णा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है। अभी मैं राधा का भी सेम इसी प्रकार में बनाऊंगा, तो राधा का भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको ब्लेंडर में मैं किस प्रकार उसका 3D फाइल बनाऊंगा। ठीक है, सो नाउ वी विल मेक द सेम थिंग फॉर द लेडी इन दैट इमेज। This lady, the Aspire, you can see, we make this in the blender in the same procedure. In the face builder you have to go into create new head, just delete that cube, just delete the cube, add an image from the desktop, add the image. Okay, so in the same way we will be doing the Radha, the lady in the image। हमने जैसे कृष्णा के लिए जो मॉडल बनाया था, जनरेट किया था, उसी प्रकार हम राधा के लिए भी बनाएंगे। ठीक है, तो आपको पॉइंट से पॉइंट मिलाते जाने का है। You have to go and by doing point to point you have to adjust it like the way I am doing। See, if you right click on this point, the point will disappear। अगर आप राइट क्लिक करते हैं एक हद पॉइंट पे तो वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ये यहाँ लेता हूँ। ठीक है, अभी ये जो आँख है इस आँख को मैं यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कुछ आया है। उसी प्रकार अभी जो लिप्स वगैरह है उसको आपको एडजस्ट करना है।
डिप्स की व्यू पॉइंट्स को आपको वहाँ पे लगाना है। सिमिलरली both side you have to adjust it. Okay, you have to take care of the curves. You have to adjust all the edges smoothly, like here. Left click and just adjust the point. Zoom out, and again zoom in. Left click, adjust the curve. Left click, adjust the curve. Okay. Oh, this happens. This happens. Simply Control Z. See, this is why happened, because when I pushed here this hand mark of the move, it accidentally touches this point, and that is why that happened. You can use Shift plus middle mouse button to move the, but beware, you should not click in between this wire mesh. It will get distorted easily, the like the way it happened just now. Okay, so here how we have to adjust the nose, like this. We have to adjust the nose. आपको हर एक पॉइंट से पॉइंट मिलाते जाना है, ठीक है दोस्तों। ओके, वापस आप शिफ्ट प्लस मिडल माउस बटन टू पैन इट. You have to adjust each and every curve, each and every edges. You have to match it. Okay, so now you can see. Now you can see. Now we have to adjust the eyes. See, like this. You have to adjust. हर एक पॉइंट को उठा उठा के आपको उसकी एजेस मैच करके उसको बराबर शेप में लाना है, ठीक है। ये आपकी स्किल है, आप किस प्रकार उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी मैं ये आईब्रोज जो है एडजस्ट कर दिया। अभी ये वाली जो आँखें हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये वाली आँख भी आप देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ी सी आगे ले लीजिए, ठीक है। ये वाली ऐप आप तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई है, खाली थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आईब्रोज आप देख सकते हैं, यहाँ से जो नीले कलर का है वो उसके आईब्रोज है। यहाँ पे मैंने आईब्रोज ले ली है, यहाँ ऐसे, ठीक है। ये आईब्रोज भी मैच हो गई, आई आँख का भी हो गया। Now that everything is done, we can see sometimes whenever we adjust the topmost points, uh, it suddenly distorted, some stretching occurs in the lower points. For example, here notion little bit shifted, so you have to again adjust it little bit, not a more, little bit you have to adjust it. Okay.
like this. Okay, okay, now it is okay. Little bit here. Oh no, no, no. Looking okay, but still. Okay, now it is okay. Now you can see. Okay, so this is how the Radha's base relief will look like. If you want to change something, you can click into the image. अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, कुछ चीज़ नोज का वगैरह कुछ अगर आपको गड़बड़ लग रहा है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा उसको दबा देता हूँ। ये मैंने दबा दिया है। ये नोज जो है थोड़ा स्ट्रेच। ओके, ठीक है, अभी मेरे को ठीक लग रहा है, तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ कि ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। अभी मुझे ये जो मॉडल का स्क्रीनशॉट लेना है, सिंपली मैं अल्ट प्लस स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन दबाऊंगा। टेक द स्क्रीनशॉट, आई विल प्रेस द अल्ट प्लस print screen and simply in the paint menu I will press the model's image. Now I will this screenshot are just for the purpose of uh, adjusting angle at the time of importing this model into the Aspire. We will need these screenshots. That is why we are making it. So just name it as Radha and save it in the desktop. आपको ये जो इमेज हमने बनाई है, ये हमको ये जो मॉडल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वी विल एक्सपोर्ट द मॉडल नाउ द स्टिल फॉर्मेट ऑन द डेस्कटॉप विद द नेम राधा। ये जो मॉडल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी हमने इमेज जो ली है, वो हम इसका एंगल एडजस्ट करने के हिसाब से हमें ये जो मॉडल हम एस्पायर में जब डालेंगे तब हमें इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये हम राधा का जो ब्लेंड फाइल है, इसको भी हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्लेंडर का काम हो गया। अभी हम एस्पायर में आ गए हैं। एस्पायर में हमें ये जो मॉडल है जो हमने बनाया है अभी हम जो मॉडल बनाया है उसको हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कंपोनेंट 3D मॉडल, simply import the Krishna, the man we have which we made in the going to the front is very small. We have to increase some height, can increase up to 4000. Okay, now open that image that we took the screenshot. Open the image. Where is that? Okay, over here, Krishna's image. We have to see the image and patch the model as per that image only. Okay, so here I will go with the left side view. See, now again we have to give the size. This is what happens. Just rotate it 90 degree with the head. Sorry. Here again give 9.00. Now it is okay. Okay.
increase the size a little bit more, for example double it. Okay, now see the image and paste in the same angle. Okay, you have to do see the image and paste it into the same angle. You can change the angle, set the angle using your mouse only. जस्ट क्लिक इनटू द एक्स वाई जेड। आपको इस इमेज के हिसाब से ही ये जो स्टिल फाइल हमने जो बनाई जनरेट किया है ब्लेंडर में, उसको इस इमेज के हिसाब से ही आपको पेस्ट करना है। ठीक है, उसके लिए आपको एक्स वाई जेड रोटेशन जो है वो ऑन करना है। ठीक, अभी ये जो कान है ये यहाँ तक आता है, तो मैं इसको थोड़ा सा घुमा लेता हूँ। यही बहुत, इसमें यही सबसे ज़्यादा ट्रिकी काम है, एंगल एडजस्ट करना। ठीक है, ये एक बार आपका हो गया, एक ही बार आपको करना है, इसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको एंगल पहले एक्स में सेट करें फिर वाई में सेट करें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। यू कैन सेट इट फर्स्ट इनटू द वाई देन टू द एक्स, you can do it. Okay, see now it is only moving in the along the y-axis. So along the y-axis you can see the image and do it, see the image and do it, see the image and do it. Okay, now you can see y angle is perfect. Now you can set the x angle. See x angle, for setting x angle you can see there is not much little bit eye over here। यहाँ पे उसकी जो दूसरी आंख है वो ज़्यादा नहीं दिख रही है, तो हमको x रोटेशन यूज करके उसकी जो दूसरी आंख है वो कम से कम दिखे, इसे इस हिसाब से आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कुछ इस प्रकार ले लेता हूँ। आप जूम भी कर सकते हैं, यू कैन जूम इट। ओके, नाउ यू कैन सी। Okay, you have to, the thing is setting the angle is, it is the only skill, a difficult thing over here. Once it is set, you don't need to worry. Just have to make the model, because it is the best, it will give the best to the relief image relief file in the aspire. So this is the secret of 3D human face modeling that I am just told the peoples. Okay, now you can see. Okay, now it is okay. Now it is okay. Now it is okay. No, no, no. This, you can see this angle over here, this angle over here. Now you see. Okay, now the angle is okay. Now angle is okay. See. Okay, angle is okay, but distance is less. Distance is also okay. Now you see. Now that this curve and this curve you have to see, that is also okay. But okay, you can now. Now everything is okay. You can paste it. Before pasting it, I want to tell you, you have to set it in such a way that the minimum amount has to go below the uh, maximum amount of the jet should go below the centroidal axis. For example, over here you can see, you can paste it up to over here, no problem. You can paste it just simply
make sure you have opened this discard data below the zero flag has to be marked off. आप जब इस मॉडल को पेस्ट करेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि ये जो है जीरो प्लेन मॉडल के एग्जैक्ट सेंटर से जाना चाहिए। उसकी जो पिछले वाली साइड, जितनी साइड ऊपर से दिखती है उतनी पूरी कवर होनी चाहिए। उसके पीछे वाली जो साइड है वो आपको नहीं लेना है। वो अगर आप ले लेंगे तो उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको परफेक्टली लेते हैं और सिंपली जिसका डाटा बिलो जीरो प्लेन करके इसको ओके कर दीजिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मॉडल का जो है 3D मॉडल की जो 3D है यहाँ पे आ गई है। अभी आपको एक काम करना है, इसकी जो साइज है मॉडल की उसको इसके साथ मैच करना है। Now we will adjust this model with the image. You can see how perfectly it is adjusted. It is because only we keep the screenshot at a time of importing the model. ये देखिए अभी ये किसी पर एकदम परफेक्ट जो है कृष्णा की जो ड्राइंग फाइल है उसके हिसाब से ये मैच हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कृष्णा का जो मॉडल का है हमारा जो हमने बनाया था ब्लेंडर में, उस हिसाब से हमने इसको एडजस्ट कर लिया है। अभी दोस्तों ये जो 3D मॉडल हम बनाएंगे उस पर हम लोग उसकी इमेज वाली जो फाइल है उसको हम इंपोर्ट करेंगे। देखिए किस प्रकार आ गया है ना। ये जो है हमारा कृष्णा का मॉडल ये है, बेस है। इसकी हाइट हमें थोड़ी कम रखनी है हमारे मॉडल के हिसाब से। अभी we have to adjust some height as per the model. For here the height is I think height has to be somewhat 250, very less, very less. I think it has to be 750. Okay, now it is looking good. Now it is looking good. You can see how perfectly it is looking now. All the shapes are looking good. You can see it. Okay, so this is how we give the best to the base image, base relief. Okay, so now we will import same for the Radha. If you want to give some little angle, you can give it from over here. You can give it. Okay, so you can also use the distortion over here if you want to change somewhere, some point you have to adjust. You can simply by pressing I, you can add a point and simply drag it. Okay, simply drag it. You can see like this you can do. And okay, now you can see this part is perfectly adjusted. Just a little bit over here. Okay, now it has to be adjusted a little bit, so you can add the I point. With pressing I, you can add the point. Simply little bit shifted.
Okay, it is okay, now it is okay. Just simply break the distortion. Let's press okay. Now it is ready. Okay, you can see it. I'm hiding it for our. Now the same thing we will make for the Radha. Okay, so just go into the model, import component or 3D model, go into the desktop and choose Radha. Just open the मॉडल. अब राधा का मॉडल हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं. राधा को भी हम लोग उसी तरह स्क्रीनशॉट लेके उसको जो मॉडल है उसको हम इंपोर्ट करेंगे. यहाँ पे मैं फ्रंट व्यू लेता हूँ या फिर 2500 लेता हूँ. देखिए हमारा जो मॉडल की साइज है वो बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है, तो आपको उस हिसाब से उसको पेस्ट करना है. ठीक है, so now we will be importing the same thing. Just open the Radha's image, the screenshot we have took, and then now you have to paste the model in the same angle as this image. ये जो इमेज हमने लिया था स्क्रीनशॉट राधा का, उस हिसाब से ही हमको ये जो मॉडल है उसको एडजस्ट करना है और पेस्ट करना है. तो यहाँ पे मैं इंटरेक्टिव रोटेशन XYZ लेता हूँ और इमेज के हिसाब से मैं उस मॉडल को, इस मॉडल को जो है वो मैं पेस्ट करूँगा. ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा. See, this is the most difficult thing in making the 3D phase reliefs, base reliefs. This is the hardest thing you have to do. Make sure the angle should match. Now it is okay. Now it is okay. I think it is okay now. I think it is okay. Little bit. You have to see this edge is matching over here. This edge little bit shifted. Now it is matching. Okay. So I think now it is okay. Yes, now it is okay, but here this distance is a little bit less. You can keep it like this. I think now it is you can see here this hole, left side hole has to be a little bit more. Okay, now it is I think you can try this one. Okay, now just simply we have to paste the required only. You can see here the requirement is only this. Okay, the requirement is up to this only. Okay, a little. Okay, now just click on okay. Make sure the discard data below the zero plan is on. अभी हम इसको हमने स्क्रीनशॉट के हिसाब से एंगल जो है उसका एडजस्ट कर लिया है. अभी हम इसको पेस्ट करेंगे. सिंपली प्रेस द ओके. ओके, नाउ अभी हमको इसकी जो है जूम करके हमको इसको एडजस्ट करना है. आई थिंक हमारा जो हुआ है ये थोड़ा सा गलत तो नहीं हुआ है. Increase some size, increase the size, increase size.
If it doesn't match, you have to try the again the same thing. You have to do it. See, the nose is not matching. Nose is not matching. You can see the nose is not matching, so we have to do it again. Okay, now I have tried it again I have created it, imported it. Now we will see it how it is going. Just in the same way, we have to do it. See, the ear is not going to be there in the image, so we can avoid ear. We can take up to this only. Okay, we can take up to this only and simply press the OK. Now simply we have to scale it. इसको थोड़ा बड़ा कीजिए, बड़ा करके अब इसको. Now it is perfect. Now it is perfect. You can see. Now it is perfect. Just a little adjustment, but I think the nose curve is matched. Okay, the nose curve is matched. I think some little bit adjustment has to be there, but everything is okay now. Whatever the height you give here, for example, here you give 7 7. Whatever the height you give 720, in the same proportion, you have to give the height over here. Now I will put here as a 800. Okay, I will put it as 800 is okay. You can see now. Now you can see. If you feel it is not matching, you can again try and make it perfect alignment. So your base model. Okay, I think it is okay. It has to shift it a little bit downwards, I think. Now you can use the distortion over here. Simply apply into the boxes. Insert point I. Okay. Here also insert point I. Also, a little more, a little less. Here also one point with I by pressing I. Okay, this curve is okay now. Simply I can press the I button. Simply press the I button. Sorry, simply drag it using mouse left click. Here also you can put some point using pressing I button. See, if in nearby you can make the model importing, it is okay. It is okay. Now you can also put some point over here. Simply drag it little bit. Also this one. Now it is okay. Just make it okay. Now you can see the nose is not matching, though it is good. Okay, you can try it again if you want, but I'm going to see now how it is looking. The model one. See now how it is looking.